Welcome to Delhi and welcome to our school. आइए Yes, all the schools have been broken and upgraded. All 100%. So ये जो school है, all the schools are like this now. They are better than private schools. Namaskar, namaskar. Our floor leader in Parliament. Very nice. Mr. Reddy, Prashant Reddy is RMD minister here. He is our young MLA, Mr. Anand. Namaskar. Mr. Venkatesh MP. Very nice. Mr. Ranjit Reddy MP. Okay. And Mr. Santosh Kumar is member Rajya Sabha. How many numbers have been updated like this? We have roughly 1100 schools all across Delhi. 16 lakh children were there earlier, but now many children are striking their names from the private schools and coming to government schools. So, which now we have 18 lakh children in government schools. Yeah. So our education director will give a small presentation. Today is Saturday, so the kids are not there. We will just show you the take you around and. Summer vacation, sir. Usually in summer vacation we are having here summer camps. That is till 9:30 in the morning. Because youth. Manish Sisodia, Deputy CM. So. He's our education director. Sir, on Honorable Chief Minister Shri Arvind Kejriwal ji, Honorable Chief Minister of Telangana Shri KCR Rao ji, Honorable Deputy Chief Minister of Delhi Shri Manish Sisodia ji, Honorable MP from TRS Shri NN Rao ji and other MPs from Telangana and all officials present from Government of Delhi and Telangana. On behalf of the Government of Delhi, we welcome you here in our government senior secondary school Nanakpura. Sir, it is a privilege to host you here in our school, sir. Sir, we'd just like to give you a brief about today's program. Sir, we will be showing you a small video on Delhi's education journey. Thereafter, there will be a small presentation, sir. Thereafter, sir, we will take you on a round of the school. Sir, since it was on a short notice, we do not have students right now. However, sir, the route will be like, we will be taking you to primary class, then middle class, then we will be taking you to Atal lab, and then we will take you to, sir, our business blasters room where few of our teams are there, sir. Sir, with your presentation, with your permission, sir, I would like to start the video, sir. आज़ादी के 69 साल इन 69 सालों में दिल्ली के This was the condition of the schools earlier. जहाँ लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें बद से बदतर होता देखा है हमने। अगर सफाई में होगी स्कूल में तो कंपनी को बनाना 2000 रुपये का सामान लगेगा, बनाना एक दिन में तो हम निकले किसी की वजह से ये सब लोगों के साथ हो पहले तो मुझे बताइए कि आपने आज तक कंप्यूटर लैब में किसी दिन बच्चे बुलाए कि नहीं बुलाए? झूठ क्यों बोल रहे आपने से कि आपके पास बच्चे आते हैं? ऐसा होगा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल क्लास में बैठ क्यों रहे? क्यों कर रहे हैं? आप चाहोगे कि आपको अच्छा नहीं ऐसा वो अच्छा मत बता रहे वो बच्चे तो अच्छे नहीं चाहोगे अच्छा टूटे पड़े पड़े प्रॉब्लम कैसे पढ़ पाएंगे? ऐसा भविष्य हम छोड़िए जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो है हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। आप लोगों ने ना एजुकेशन स्कूल से मजाक मारा है। बिल्कुल नहीं घुमा सबके बोलना चाहिए कैसे स्कूल जो है ना भविष्य हम छोड़िए जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो है हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। यह हर फैसिलिटी है जो प्राइवेट में मिलती है और बेशक उससे ज्यादा।
Now we have all new furniture, all new buildings. Everything has been changed. Every school. Complete change. Now these are the kind of labs. These are now auditoriums. दिल्ली के अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो रही है उसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। दिल्ली के अंदर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। Thank you, sir. So we will now take you to the presentation, sir. So what made Delhi education reforms possible? So the most important thing that was there was that 25% of the total state budget has been consistently dedicated to education, sir, from past 6-7 years. Sir, in fact, one more thing that has happened is that in Public Works Department, PWD, a special wing was created specially for education projects. So much funding was given in education that a separate wing was created, and it was ensured that big projects in the number of classrooms were taken in so much of sizes that big clusters were formed, big tenders were done, and that's why the contractors who came were the class 1 and the better contractors, and they were able to complete the work of good quality. Sir, there is a strong political will, sir, to fix the problems, and it was led by Honorable Chief Minister and Deputy Chief Minister. In fact, sir, during the initial days when construction of schools used to happen, Honorable CM and Deputy CM used to visit the schools so that they fixed the benchmarks that the quality of schools should not be compromised at any cost. There is a strong team of educationists, sir, from within and outside the government system which is working on in education department. A new program called Change Maker in Education Fellowship was started, where educationists from across the country and globe were taken in the department, and they are working with the government department in framing policies for bringing curriculum changes and other reforms. Sir, school HOS, this was found that school HOS plays a very important role, the school principal, in overall managing the affairs of the schools. Hence, his powers were increased by more than 10 times, sir, the financial powers of the school principal. So, there is a culture of celebration and recognition in Delhi government. In fact, any positive thing that happens, that is appreciated not only at district level but also at the level of education minister and chief minister, sir. Sir, if you would like to see the results, sir, if we compare in 2014-15, sir, the Delhi government pass percentage in class 12 was 82%, which was well below 88% that was the national average, and 90% that was private school. However, with time, sir, now if you see in 2019-20, the Delhi government's pass percentage has increased to 98%, sir. And in fact, in 2021 and 21-22, sir, it has crossed 99%. It is 99.4%, which is much better than the private schools and the Indian average, sir. So more than 500 students from Delhi government schools have qualified IIT JEE Mains and NEET. Sir, in fact, this year All India rank 8 in EWS and AIMS was also from Delhi government schools, sir. So more than 3 lakh students, 3.7 lakh students from private schools are migrated to Delhi government schools. Sir, these are the 3 curriculum reforms. Melania Trump, the US president's wife, when he was the president, she visited this school. She came to see this school. Sir, Madam Melania Trump. She attended happiness curriculum. 1.5 hours she spent in the happiness class. Sir, this is something which is very new, which is not there in any other part of the country. That 3 new curriculums have been introduced in our government schools, and they are being practiced regularly in schools.
And initially they were in government schools. Now, sir, from this year they are being introduced in private schools also, because they have also now shown interest in adopting them. Sir, happiness curriculum, as has been told, the focus is on emotional resilience among children in a scientific manner. Sir. Entrepreneurship mindset curriculum, sir. In this, we will be visiting a business blasters program that is running, that has come on, that was live telecasted on television also, sir, and it has got a great response. And we have few teams here today, sir. We will be taking you over there. So in this, we are giving seed money to our students to come up with their business ideas and on whatever and experiment that. And we have 3 lakh students in 11th and 12th. So all were given offer. So they made 52,000 groups. So we say they made 52,000 startups. 1 student, some has 4 students, some has 10 students. So all of them came together. 52,000 ideas were brought up. And almost everybody learned something by doing business. And many of them has become successful. They invested, they took, say, there were 10 students, they took 20,000 seed money from us. And they made lakhs of rupees. And then we shortlisted some of the... Yes. So after 1 year of their business, or maybe 6 months of their business, we shortlisted 1,000 business ideas. We presented to the higher authorities, within the department and to some experts. Then out of that we chose 100 ideas. For 100 ideas we invited the investors. And every single kid's business idea actually got invested. Someone got 2 lakhs, someone got 10 lakhs, someone got lakh, someone got more than that also. And moreover, we are not leaving it there only. We requested our state universities to create extra seats in their BTech and BBA programs. So now they are getting direct admission. So this business blaster program, you meet some of the teams here. This business blaster program has become the competition also to get admission into BBA and engineering colleges. We call it business blaster. We call it business blaster. So business, their minds. So ma'am, all these kids, none of them are looking for jobs. From 11th class onwards, they've started thinking, what business will I do when I pass out? They all have started thinking that we have to do business after passing out. So we have a daily class of happiness curriculum for nursery to 8. For 9 to 12 we have a daily class of entrepreneurship mindset curriculum. And last to last year we started Deshbhakti curriculum also. For this also we have a daily class from nursery to 8 and some part of it is for senior class. Sir, in Deshbhakti curriculum we teach, it's more of interactive sort of curriculum where teachers and students, they sit together, they have discussions and they ask what is Deshbhakti, and students try to answer in their own language what they consider Deshbhakti is. Sir, this is another important area. One was infrastructure. Government invested huge money in infrastructure. The second need was felt was in human resource management and improving the... So we sent all our principals abroad in some or the other country for training. And we sent all our teachers to IIMs for training. So, sir, our teachers were sent not only in India, the best institutes in India like IIMs, but they were also sent abroad like NIE, Singapore, Finland and Cambridge. In fact, sir, in the coming June, 2 of our batches are going to Cambridge again, our HOS batches. Apart from that, sir, we had mentor teacher program. We started few new programs, sir. The idea was that since government has launched so many schemes and so many curriculum reforms, there is a need to handhold all the school teachers and principals. So new programs were launched like mentor teacher program, teacher development coordinator program, cluster leadership development program. And sir, in all these programs regularly, not only are direct as at my level, but at minister's level also regular feedback and review happens, sir. Sir, our teachers are also applying for Fulbright fellowship and more than around 30 teachers have got sir Fulbright fellowships. In this Fulbright fellowship, they are invited to America. They spend their, I think, 8 weeks? Yes, sir. 8 weeks they spend in their schools and universities and they learn from them. Sir, this is the next level of reform that now Delhi government is envisaging. First was infrastructure, then teachers training. The third is on the curriculum reform, sir. Right now, sir, there is the focus is much on rote learning.
So now the vision of our education minister is to change that from, and honorable chief minister is to change from rote learning to more on inquiry based learning. So sir, Delhi Board of School Education has been set up. We have tied up with International Baccalaureate, IB, we have tied up with IB, so that sir, a complete shift is brought in the way assessment has been done. We have also tied up with sir, Australian Council of Education Research, which is considered the best among the assessments, sir. Apart from that, sir, we have started new schools of specialized excellence in 5 domains, sir. That is science, technology and medicine, STEM, humanities, performing visual arts, high-end 21st century skills and armed forces preparatory school. So these are the schools where new subjects, new courses are being started, curriculum is being developed, sir. Like if I would say, sir, example of performing visual arts, then specific courses developed just for music, just for fine arts, so that a child, if he wants to go in that field, sir, he is able to progress there after from class 12. We are also having some tie-ups with foreign universities, and a lot of partners have come in, sir, for developing this curriculum, like IIT Delhi, Tata Institute of Social Sciences, NIFT and other major players. Sir, so this is it from our side, sir. Now we will go on the visit of the school, sir. Sir, this is a normal Sarvodaya school, sir. Apart from our specialized school, we have normal Sarvodaya school. So this is a normal Sarvodaya school, and it was renovated, sir, and new construction was done in 2018, sir. आगे चलते रहो भैया, आगे चलते रहो, जगह दो, थोड़ा जगह दो टोटली। हाँ नए भी कई नहीं, हाँ एक्चुअली दिल्ली में लैंड की प्रॉब्लम है, सो हमने क्या किया कि नए स्कूल की बजाय एग्जिस्टिंग स्कूल्स में नए ब्लॉक्स बना दिए, तो 22,000 न्यू क्लासरूम्स। Additional director, she'll take us to the tour of this. Welcome, sir. आइए This is the room where I'm taking you. सॉरी Media थोड़ा सा कम है। When a student comes to the school, sir, he comes with lot of emotional values from the homes. So we have created this happiness mindset curriculum. यहाँ पर when the student comes here, they are doing happiness activities and mindfulness activities. So there are soft mattresses. So if the child wants to sit and relax himself, they can relax. If the child wants to have a creative expression to express his energy, he can do that also. If you see those This is pictures, special meditation room. they will During the make day also, if a child feels some distress, some tension, he can easily come and sit here. It's a quiet room. whichever form he wants to express himself, he wants to sit quietly, he wants to do yoga, he wants to meditate. The teacher is there to help him out and with these activities, and he can do that. And with that relaxed mind, then he further proceeds to the class. In every school this room is there. No, sir, not in every school. This is the principal's creation. So in few schools we have replicated this. Many principals have done their own creations also. These ideas were acquired from where? This happiness kind of thing. Happiness, sir, we have been doing Vipassana, sir asked that we have to make good human beings, so how to do. So this is the answer to that. It's usually people, And idea also evolves. We start with something, then slowly and gradually. So much comes up. So much, yeah. gradually, ये वाली सारी बिल्डिंग नहीं बनी है Totally. टोटली। take you to right, sir. Rita ji, right?
So the school was established in 1958, and after that in 2018 the rooms were revamped, and now you see the fantastic building, the very good infrastructure. You'll see दिल्ली में पहले मोस्टली स्कूल टेंट में चलते थे. आज इफ यू सी द इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज and what is केजरीवाल साहब आने सा बैकग्राउंड स्कूल भी आएगा. अभी जाएंगे उधर. And what is the unique feature about this building is that we have not concretized the whole playground. We have kept kacha spaces also for plantation, so that child knows the importance of ecology and to keep the things green. And there has been a playground also. There are 68 rooms in the building, sir. And the classes 68. And the classes start What is the from strength of the school? Sir, 824. What is the staff name? The staff rooms are also there. And स्टाफ number of staff number is approximately 65, sir. 65. Yeah. And from What nursery is to the ratio, student-teacher ratio? you have Sir, found? it has been according to NEP. It's 1:30 for the small classes, and for the upper primary and secondary classes 1:40. it becomes roughly 12, no? 65 teachers, 800 students. Roughly 12. And there are fruit trees also, sir. Jamun trees, mango trees, and there are flowering trees. Curry patta trees also, sir, so that a student can learn about the medicinal values of it. इधर से जाना. Actually, most important is the looks and the infrastructure. Now the teachers feel like teaching, children feel like studying. पहले तो स्कूल में कोई आना ही नहीं चाहता था बच्चे. टीचर्स को पढ़ाने का मन ही नहीं करता था. This is a nursery room, sir, where you can see that furniture has been specially made and arranged according to Something the like a play school? not sir, it's above place. Above place. After place. And since new education policy is giving focus on strengthening of foundational learning, so nursery, KG and primary classes have been given special furniture, special teaching learning material, and the teachers have been trained accordingly to use that. And if you can see these can be arranged in a separate manner. These can be like. अभी आपको प्राइवेट स्कूल में भी नहीं मिलते कहीं इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर. If the teacher wants to organize a play activity in the classroom, we can remove these benches and we can arrange here, and the chairs can be paired accordingly. Children can sit and talk. Storytelling session is there. If they want to enact the story, the teacher is having hand puppets and other things over here, so they can be used and the student can listen to the story. If they want to have a small play session in the classroom, so that can be done, and they can be organized in this way so that together they can sit and color the classroom, color books with them. Special What is coloring the books. medium of language that they are following? Hindi and English both ways. Both are. Hindi and English. Largely in These lower books are classes provided we there, prefer. sir, and they are kept in the open racks. And as you can see, there is an open library, the Pulwari, sir, because of very young students, they can fill out the shapes, colors, fruits, and these are kept in the classroom itself, so that student is not burdened with a school bag to carry it home and bring it again. And if you can see over there, sir, this is an open library in the classroom. If the student wants to, hear a particular story, or if some storybook is appealing to the child can pick it up from there. It's arranged according to the height of the child, and the teacher can narrate it to them. So the student will feel connected to the classroom, that it's my classroom, the reach is within my reach. You can see some various expressions are there, sad, happy, so the teacher will like paste it in there. The corridors are specially designed for younger students, sir. If you can see, these are the colorful tiles, so they can touch, they can draw, they can do whatever they want to do, and later on we will just clean it. There are different colors. इस पे वो ड्रॉ कर सकते हैं. Yes, sir. There are different colors. There are different colors, so the color recognition is also there. They love, especially दीवार खराब करना ज़्यादा अच्छा लगता है.
And there are special play area for them because they are very young students, so they generally don't mix up with the older students. And this is an activity room for nursery, KG. You can see the doors up. मतलब पहले टेंट में चलता था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, टॉयलेट्स नहीं थे, कोई लड़की को शिशु आए तो उसको अपने घर जाना पड़ता था। वहाँ से नाउ सी द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसीलिए बहुत सारे बच्चे अपने प्राइवेट छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें మనం కూడా ఆల్మోస్ట్ అన్నిటినే చేస్తున్నాం. వీ హావ్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ వన్ ప్రోగ్రామ్. నాట్ లైక్ దిస్ ఉన్నాయి సార్. ఉన్నాయంటే యూ ఆర్ ఓన్లీ డూయింగ్ ఆన్ ద ఫిజికల్ వర్క్ ఆఫ్ ద స్కూల్ బిల్డింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. కరికులం we are not touching. We have not touched the curriculum. I just inquired with the man who is there in Canada. No, we will interact, we can interact. Yeah, and that we can yes. Since let's not start from the scratch, we can learn from each other. Since this is an activity room, sir, we have lined the floor with these mats. Here, if the child wants to play, they can play. If they fall, they will not be afraid of getting The hurt. best part of the whole program was to send the teachers abroad. Exactly. Yes, sir. To change the mindset and reorient them. ఆ రెండు కొత్త curriculum and Everything happened. First year, we gave emphasis only on 4 things. सारे स्कूलों में पीने का पानी होगा, सफाई होगी, टॉयलेट्स ठीक होंगे, सिक्योरिटी होगी। उसके बाद सारी बिल्डिंग्स तोड़ के बनानी शुरू की, तो लोगों को लगने लगा, सबको एनवायरनमेंट अच्छा मिलने लगा। फिर टीचर्स को अब्रॉड भेजना चालू किया। up to here we are taking up now sir. Up to sir ने जो in the first phase. we are in the first phase. आप 4 बात बोले we are taking it now. Okay. We are doing it now. It's actually gradual. It can't happen in one go. हमारा कथा कुछ अलग है ना, हमारे लार्ज नंबर आपका बहुत large है। एरिया बहुत बड़ा है। जैसे अभी वो भगवंत मान आए थे, उनके 22,000 स्कूल्स हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेम है। हमारे 1100 स्कूल्स हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन my सेम है, God. नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेम है, क्योंकि छोटे छोटे गांव में भी स्कूल है वहाँ पे। Right. एक स्कूल में 40-40 बच्चे बस उतने हैं, हैं। हमारे एक स्कूल में 2-2 हज़ार बच्चे हैं। जो हमारा 2000 स्कूल तो हम मानते हैं नॉर्मल है। ये कितना यहाँ पे कितना 1000 820 800 तो ये हमारा आपका डेंसिटी ज़्यादा है। हमारा डेंसिटी हमारा ज़्यादा है। 3-4 हज़ार वाले हम मानते हैं कि हमारा बड़ा स्कूल है। 4-4 हज़ार बच्चे 25% स्कूल में बैठते हैं, इरिगेशन में बैठते हैं। ये सार spend about 8,000 irrigation, that is a rural. How much money was spent? We have spent 25% budget consistently since day one. राइट नाउ Total budget is का 70,000 Dedicated to education. education. So first year our budget was 30,000 crores. This year it was 70,000 crores. So 25% of You are investing up to what level? we are. School level. नो सर स्कूल एंड कॉलेज दोनों College up to what level? वी हैव ऑल यूनिवर्सिटीज Till university. Yes. Budget goes to that also. Yes. So if you can see all the soft toys or whatever activities, musical instruments, whatever they are, they're kept in the open. So the students don't feel hesitated and they can play, they can feel connected to the school. And here you can see that there's an alphabet tree. That's it. So the alphabets can be removed. The teacher can ask the child to identify the alphabet and keep it there. So it's a kind of activity-based learning. We are not telling you this is A, this is B, this is C. So we are just involving the child in doing the activity that we Total number of teachers in Delhi, KG कितने टीचर्स हैं टोटल? 60,000. 60,000. 60. 60. Padarvel Kottollandu. So there's a Padarvel. They were actually in the process of Yes, yes. improving the system. అది ఇంగ్లీష్ వచ్చేవాళ్ళని తీసుకోగలుగుతాం. అంతకన్నా ముందు వచ్చింది అంతకుముందు ఏమీ లేదు. అదే అదే అది It was a neglected thing. मजदूर लोग भी भागने लगे प्राइवेट स्कूल। छोटे छोटे सर वो काम करने कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है सर वाले। वो एक टाइम का खाना कम भी करके बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं। प्राइवेट में प्राइवेट में अब सीनियर एडवोकेट्स दिल्ली में अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के बड़े यहाँ मैं एक क्लास में गया, मैंने एक बच्चे से पूछा, वो बोला मैं प्राइवेट छोड़ के आया। मैंने कहा कौन सा प्राइवेट? सेंट कोलंबस, दैट इज़ द बेस्ट स्कूल इन दिल्ली, सेंट कोलंबस। उसमें एडमिशन लेने के लिए बड़ी सिफारिश, वो छोड़ के वो स्कूल में आया। इस स्कूल में जस्ट फॉर मैंने एक जगह रेफरेंस टीवी पे देखा है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यस्टरडे ओनली
from under secretary from the vice president house for admission. एडमिशन His own child. In government. Joint Secretary Government of India wants government school. यूजुअली पहले प्राइवेट स्कूल में एडमिशन की सिफारिश आती थी, एग्जैक्टली अभी सब गवर्नमेंट स्कूल में सिफारिश कर रहे हैं. So all our classrooms are decorated like that with teaching learning materials. For this is a bit senior. That was much junior than KG. This is KG. Nursery KG. So this, if you see the roof of the corridor, it has been cladded And with the. there are CCTV cameras everywhere. वो काम कर रहा है अभी? हाँ. हमने हर क्लास में एक CCTV कैमरा लगा दिया और उसका पासवर्ड उसका वो हर पेरेंट को दे दिया. सो ड्यूरिंग वो जब चाहे देख सकता है मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है क्लास के अंदर बैठ के. वेरी इंटरेस्टिंग. We are planning to establish a Montessori lab for very small students, and this is the space we have identified that a Open Montessori lab. open Montessori lab, so that the sensory motor experiences of the child can be harnessed for their proper growth and integrate them into the education process. One school created this recently. Experience with teachers and kids is so good. We have decided that in all school we'll have gradually. This year we are starting with 100. citizen correct. But early childhood education is one of the most important issues Exactly. India is missing. That's what really develop the aptitude. Everywhere we have CCTV cameras. Be careful of Is it classroom? So like you can see here, this is bigger classroom. So there should be two CCTV cameras. One is there. That is a CCTV. One is here. So this feed is live. एक ये किया था हमने सारे स्कूल्स के सारे डेस्क चेंज कराए थे. पहले बच्चे नीचे बैठते थे तो एक ही किस्म के डेस्क आपको पूरी दिल्ली में मिलेंगे. अब ये सारे बोर्ड्स चेंज करा रहे हैं. ऑल ऑफ देम गोइंग टू बी डिजिटल बोर्ड्स नाउ. ఆల్ సీలింగ్ అనేది చేసాం లైటింగ్ కోసం. There were allegations. Now there is this. Anyone is complain, you tell us, we'll check. And the parents can check. Yes, sir, same classroom. Same class. ये तो सेम है. चलिए We'll take you to the business blaster. We have requested. Business blaster. We call it business blaster. Teams. Blaster, no? Yes, sir. business blasters program. So you can see the हमारा- components have been decorated with colorful tiles also, and these tiles are used for geometrical shape kind of teaching to the students. Like they can count the small tiles and then they can count the colors also. These are some of the sports facilities given in a TT classroom. कैरम बोर्ड In every school. एवरी स्कूल. So some window Sports is very maintenance while like tree has been preserved and that was. When we came, this was almost all jungle. सरकारी दिस इज अ न्यू ब्लॉक. ये पूरा न्यू. Now, ये बिजनेस ब्लास्टर्स है. अच्छा. दिस इज वन ऑफ द लैब्स. where students work on ये साइंस प्रोजेक्ट्स के लिए सर. कौन सी क्लास के लिए लैब है मैडम? Body classes के लिए 9th onwards. The students have developed a smart dustbin. So it's a sensor here. If you like put the hand, it will open automatically, and you can keep the garbage here without soiling your hands. Made by you. Apart from that, there is a 3D printer also. Here also students print in a 3D. So through business blaster, actually students have explored themselves. We have never imagined that students studying in government 11वीं और 12वीं क्लास के हर बच्चे को हम 2000 रुपये उसके हाथ में कैश देते हैं और उसको कहते हैं इसे बिजनेस करो.
तो 4 बच्चे साथ आ गए, 5 बच्चे साथ आ गए, तो 10,000 रुपये हो गए। फिर 10,000 से कुछ भी सोच के वो बिज़नेस शुरू करते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उस 10,000 रुपये को 6 महीने में 1.5 लाख रुपए बना लिया। कुछ प्रोडक्ट बनाया, व्हाट्सएप करके उसको बेच दिया, फेसबुक पे डाल के उसको बेच दिया। उन बच्चों को फिर हमने बड़े अमीर लोगों से मिलवाया, दे इन्वेस्टेड इन देम। तो अब सारा एनवायरनमेंट जो है पूरे दिल्ली के स्कूलों में वो ये है कि हमें बाहर निकल के बिजनेस करना है, नौकरी कोई नहीं मांग रहा। यस यस, उनका दिमाग इस तरह से, नो वन इज लुकिंग फॉर ए जॉब। हो सकता है फेल हो जाएं, 2,000 रुपये हो सकता है डूब जाए, लेकिन उनका दिमाग चल रहा है, सोच ही अलग हो सोच अलग हो गया। सर मैंने एक बच्चे से पूछा, जनरली आई इंटरेक्ट विद देम, आई आस्क्ड देम कि आपके अंदर चेंज क्या है, ये बताओ। ये तो ठीक है आपने 10,000 डाला, 20,000 कमा लिया, दैट इज वन थिंग, माइंड में क्या चेंज आया। सो इन सच एन इंटरेक्शन वन ऑफ द स्टूडेंट सेड, सर पहले ना डर लगता था 99% नहीं आए तो क्या होगा, अभी तो टेंशन नहीं है, 60% आ गया तो जिंदगी चल गई। नौकरी बिजनेस कर लूँगा मैं, नंबर का नहीं है, नंबर का गेम नहीं है, कॉन्फिडेंस आइए इधर। Yes, sir. Manish ji, sir. Manish ji, I'm fine. थैंक यू। What is happiness for you? Yes, sir. These are all closing. Sir, happiness is also one of the wonderful initiatives. Parents are reporting कि हमारे बच्चे में हम बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं, फैमिली रिलेशनशिप, फोकस। एक्चुअली बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, इतने गरीब बैकग्राउंड से, रिक्शे वाला, मजदूर, उनके घर में इतने लड़ाई झगड़े होते हैं, Distress होता है। बहुत डिस्ट्रेस होता है। तो वो हैप्पीनेस ने उनके अंदर काफ़ी चेंज लाया बच्चों के अंदर, उनके फैमिली रिलेशंस बहुत इम्प्रूव हुए हैं। यूजुअली व्हाट हैपेंस कि इस तरह इमोशनल वेलबींग के प्रोग्राम्स वंस इन ए वीक, वंस इन ए मंथ होते हैं। वी वर रिजिड, नो इट विल बी डेली, सो डेली हैज बीन हेल्पिंग अ लॉट। So the whole corridor has been decorated. इधर संस्कृत समिति क्या हो गया? संस्कृत समिति क्या है मनीष? So we have different clubs. अच्छा। We have different clubs in the school. For example, legal literacy club, Sanskrit club, and Punjabi different other club, languages Yeah, Eco Eco clubs. club. So there the students meet according to their own interests and they discuss activities related to that particular thing. यूजुअली व्हाट हैपेंस विद देम व्हेन दे रीच कॉलेजेस, वहाँ पे ये सब क्लब्स बनते हैं, वहाँ गोष्ठ इनका वो चलता है, हम यहीं से इंट्रोड्यूस करते हैं सो दैट दे आर फैमिलियर विद इट। For example, you can see the performing art club. विजुअल आर्ट क्लब। नहीं सर, सर्वोदय तो पहले से था। हाँ जेपी वाला। सर आइए आगे से आइए सर, आप आगे सर आगे। ये बेसिकली सर हॉल है, तो जहाँ जहाँ भी हमारे पास, हमारे यहाँ स्पेस बड़ा क्रंच है हर स्कूल में, जहाँ जहाँ भी हमारे पास स्पेस पे अच्छे अच्छे कमरे मल्टीपल हॉल। यस मल्टीपर्पज हॉल। सो ये एयर कंडीशनड हॉल सरकारी स्कूल में कोई सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल काम भी नहीं दे। हाँ ऑल दीज न्यू हॉल्स आर This is the business cluster. इनको दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। ठीक है, इनका ये बिजनेस है। ये बिजनेस इन्होंने बनाया। आप डिटेल में समझाओ कैसे बनाया, कैसे शुरू। Hello sir, Namaste sir. I am Sufi, he is Himanshu and he is Nitin. We are from Government Co-ed Senior Secondary Panjab Basti Nagro School and I am currently representing Mystic Dates. We have created another option instead of chai and coffee.
and this amazing drink contains nutrients, antioxidant, calcium, iron, mineral and many more benefits. It is natural, healthy and tasty, and we have currently generated a revenue of 67,000 rupees, 50,000, 6,700 rupees, and we have a contract of 2 lakh rupees in our hand and currently in progress. तो 10,000 रुपये, 5 लोग थे तुम लोग? Yes, yes sir. 10,000 रुपये से शुरू किया, 50,000 रुपये कमा चुके, 2 लाख 2 लाख के ऑर्डर्स हैं और इन्वेस्टमेंट कितना मिला? Investment 17 lakhs. 17 lakhs का इन्वेस्टमेंट्स मिल गया इनको। अच्छा, समथिंग लाइक अ पाउडर। Yes. जैसे ये चार कॉफी होती ड्रिंक है, जैसे ये कॉफ़ी जैसे ही टेस्ट करता है। हमारा एम्बिशन है पैन इंडिया और फिर उसके बाद पैन ग्लोबल जाने का। Congratulations. Where All are the you best. getting the raw थैंक यू सो material? मच। थैंक यू। यस। रॉ मटेरियल क्या है इसका? रॉ मटेरियल डेट्स के सीड। डेट्स के सीड्स को पीस के बनाते हैं लोग। तो आप जो 17 लाख रुपए जो आपको इन्वेस्टमेंट मिला ना, यस। तो उसको कितने मुनाफा दिया अब तक? वो तो अभी मिलेगा। वो अभी मिलेगा। मिलेगा। अभी जितना भी हमने अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 से किया है। अच्छा, ये आइडिया कहाँ से मिला आपको? आइडिया एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर थे, उन्होंने अपने घर में यूज़ करते थे इसे और उन्होंने फादर को सिखाया और फादर हमारे घर में यूज़ करते आ रहे थे। सो उनसे मैंने सीखकर इसे एक बिजनेस के तौर पे आगे बढ़ाया। And the recipe of this thing is done by you. Yes. The recipe. Yes. Yeah. The age-old recipe. Congrats, God bless you. थैंक यू सो मच सर। Become a very, very big man to fulfill the ambition of your chief minister. थैंक यू सो मच सर। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स मेरे फादर डॉक्टर हैं और मेरी मदर टीचर हैं। सर मेरे फादर वर्कर हैं और मदर हाउसवाइफ। सीएनजी स्टेशन में काम करते हैं। सीएनजी स्टेशन में। तो आप पार्टनर से? यस। 2 और होंगे ना, 5 हैं। यस। ओके। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर। Myself Wasim, he is Virender. We are from SBB Rao Avenue School and we are team Biothin, in which we are manufacturing biodegradable bags which is decomposable in 6 months, and after that it will convert into a fertilizer. Also it is water soluble, and if we will burn it, it will convert into ash, and it is no harmful effect, even animal it will eat. This is made out of what? That's a secret formula. He will not tell you. Really, you will really come up as a big business. God bless you. कितने बच्चे हो तुम? 6 members. 12,000। अभी बिकना चालू हो गया? अभी हमारा लाइसेंस जस्ट कंप्लीट होने वाला है। थैंक यू सर, आपने हमारी हेल्प करी, इन्वेस्टमेंट दिलवाई गवर्नमेंट से? यस सर। So they have got government license also to sell this 1,50,000 because it's a chem product तो। और हमारा जो टेस्टिंग है वो इस मंथ कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों ने कंपनी फॉर्म कर लिया, बिग ड्रीमर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। Wow. This Biothin. This is the solution to the plastic. Biothin is the name of the product. So they will replace single. Yes sir. This Your brand is Biothin. Product name is Biothin. Biothin is the name of the brand. What is the price of each bag? 1 rupees. 1 रुपये ज़्यादा नहीं है? हम इसके अभी एक्चुअली क्योंकि हमारे मशीनरी नहीं है, तो मशीनरी जब हमारे पास आ जाएगी इसकी प्राइस और कम हो जाएगी। कॉमन प्लास्टिक की ज़्यादा बल्क में बनेगा तो प्राइस लो होता जाएगा। अभी बल्क में नहीं बन रहा तो इसलिए प्राइस थोड़ा हाई है। पैसे कम हो, प्राइसिंग कम नहीं करना। Gaming beast. My name is Keshav and the all market team is Rahul Mathur and Aditya Kumar. We are from Government Coed Senior Secondary School, F Block, विकासपुरी। सर हमारी टीम का नाम है गेमिंग बीस्ट। विकासपुरी सर। हमारी टीम का नाम है गेमिंग बीस्ट और हम लोगों को, जो आज की जनरेशन है जो मोबाइल गेम से जुड़ी हुई है, हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो आके खेल सकते हैं और अपनी अर्निंग को कई सारे प्राइजेस दे सकते हैं। सर दरअसल एक तरह का ये प्लेटफॉर्म होता है जो 1 हफ्ते तक चलने वाला टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है। इसमें जो लोग हैं, जो कंटेस्टेंट है, जो हमारी टारगेट ग्रुप है 25 ईयर से कम, वो हमसे जुड़ते हैं और अपनी फेवरेट गेम खेल के लास्ट तक विन होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वीक 5 डेज तक होता है एंड जो विनर्स होते हैं वो डे बाय डे फाइनल राउंड तक जाते हैं। तो वीडियो गेम टूर्नामेंट्स कराते हो? वीडियो गेम टूर्नामेंट कराते हैं। तो तुमको पैसे कौन देता है? सर जो हमारे कंटेस्टेंट आते हैं वो एंट्री फीस देते हैं हमारी टूर्नामेंट से जुड़ने के लिए। एंड अभी तक हमने 3 सीज़न कर रखे हैं। फर्स्ट हमने किया था नवंबर में, 2 जनवरी में, 3 फरवरी में किया था। अगर सर मैं आपको इसकी प्रॉफिट के बारे में बताऊं, फर्स्ट हमने टोटल 1,36,000 प्रॉफिट करा है एंड रेवेन्यू 4.86 किया है। तीनों सीज़न का मैं अगर डिवाइड करूं तो इसका
फर्स्ट सीजन में हमने 48,000 प्रॉफिट किया था, सेकंड सीजन में 38,000 एंड थर्ड सीजन में 50,000। कितने लोग हो आप? 4 लोग। सर हम टोटल जब हमने स्टार्ट किया था 5 मेंबर्स थे, हमारे पास टोटल 10,000 की सीड मनी थी एंड इसके अलावा भी हम हमारी टीम में और लोग जुड़ रहे हैं जो हमारे लिए वर्क करते हैं। इन्वेस्टमेंट मिला उधर इन्वेस्टर्स मीट में? इन्वेस्टर से हमें कई सारे इन्वेस्टर मिले, बहुत सारे, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो भी हुई। अभी जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट मिल गई? अभी से इन्वेस्टमेंट कमिट कितना किया उन्होंने? उन्होंने 40 लाख। 40 लाख? हमारी रिक्वायरमेंट बता नहीं रहे हो? हो गया, डील हो गया, इन्वेस्टमेंट अभी इन्वेस्टमेंट फाइनल नहीं हुआ, कंपनी अभी रजिस्ट्रेशन होगी, देन वो सब फाइनल होगा। कमिटमेंट्स हैं एकेडमिक सर, इनको हम क्योंकि स्कूल से निकल के क्या करना चाहते हो? सो बिजनेस में मेरा जो मेन इंटरेस्ट है, मैं बचपन से ही बिजनेसमैन बनने का है, और क्योंकि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ बड़े बड़े लोगों को, एलॉन मस्क और टाटा सर, ये सब, तो वो मेरी एक तरह से इंस्पिरेशन है। मुझे एक तरह से एलॉन मस्क बनना है। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर मेरे फादर की एक मिल्क एजेंसी है, वो मिल्क सप्लायर है। आपके? मेरे पापा बर्गर बेचते हैं। आपके? मेरे ब्रदर टेलर है। आप टेलर हैं? ब्रदर टेलर है, फादर नहीं है? फादर एक्सपायर। आपके? सर मेरे पापा फैक्ट्री में वर्क करते हैं जो कन्वेयर बेल्ट बनता है। अच्छा। ऐसे इससे हमारी कई कमिंग सारे फ्रॉम profit वेरी हैं। हम्बल बैकग्राउंड एंड दे आर सर लाइक। इसके बाद हमारे एक फ्यूचर विजन भी, अभी हम सिर्फ 4 गेम तक सीमित हैं। अभी इसके बाद हम एक ऐप डेवलप कर रहे हैं जिसमें हम 20+ मोर गेम्स को ला सकते हैं, जिससे हमारा रेवेन्यू और बड़ा हो सके। बहुत अच्छा, सो प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। अच्छा है, थैंक यू। एक साहब को दो। अभी हम सर हम जो खुद की डिज़ाइन है, जो सॉफ्टवेयर, थैंक यू भैया। अभी तो सर हम वेबसाइट से अभी अपनी एक इनको डाल दो, अपने बैग में डाल दो इसको। कैसे दे दिया? आपको पैसा मिला इसका? यस सर, हाँ दे दिया। कैसे अच्छा, किसने? आपने दिया? थैंक यू। वन बैग एक बैग और हो गया। थैंक यू। ठीक है, आइए। थैंक यू बेटा, थैंक गॉड यू ब्लेस यू। What are the other activities undertaken in this hall? इस हॉल में तो काफ़ी सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ ये होता रहता है, कुछ जो भी उनका मास ट्रेड होगा। जो भी मास एक्टिविटीज़ स्कूल की होती हैं, असेंबली, ये वो। Previously, this kind of thing used to be there in जिला परिषद हाई स्कूल, सर रूरल एरिया सर कई जगह शेड होता था, सीमेंट बिल्डिंग है, तो इस मात्रा में नहीं, इसमें आधा तो हाल है सर। सर वो डिपेंड्स कि कहाँ खत्म हो कितना गया। स्पेस है हमारे। देखें ना, अभी बच्चों को सुन रहे, इफ़ यू मेक दम रियली एंटरप्राइजिंग, काफ़ी मात्रा में, मतलब सर जॉब सीकर्स कम होते चले जाएंगे, जॉब प्रोवाइडर्स। नौकरी ढूंढने वाले नहीं बचेंगे। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट इट इज। और अभी हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि पढ़ लिख के BA BCom फिर रोड पे आ जाते हैं, फिर पता नहीं क्या नौकरी करें। ढूंढते हैं तो फिर कहाँ से आएंगे? सर करिकुलम एंड दिस एंटरप्राइज बाहर कर लो। इधर ही कर लो। बाकी सब लोग नहीं, आप ऐसा करना चाहिए, अंदर है नहीं, आपको ऐसा करना सर चाहिए। आपने और लोग हैं? साउथ में कोई नहीं है। ठीक है सर, यू हैव टू डू वन थिंग सर। व्हाट दे हैव डन इज दे हैव सेंट देयर टीचर्स टू अब्रॉड। Now, because of their effort, that kind of knowledge is very much available here. Sir. Your education director, along with some officers concerned with this, shall come, share with them, and how these things can be replicated in your area. Is the point. It is essential. That's very very important. सर आज दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल विजिट किया आपने, बच्चों से इंटरेक्ट किया, बिजनेस ब्लास्टर से, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा? बिजनेस ब्लास्टर ही नहीं, ये पूरा माइंड बोगलिंग है। सरकारी स्कूल इस तरीके से डेवलप होना शायद ये देश में पहली बार है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा नतीजा मिला। कहीं अन्य चीज़ों के अलावा जो बिजनेस ब्लास्टर करिकुलम इन्होंने लाया है, उसमें बच्चे एंटरप्राइजिंग हो रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, जॉब सीकर के अलावा वो जॉब प्रोवाइडर बन रहे हैं। ये हमारे जैसा बड़ा आबादी रखने वाला देश के लिए बहुत ही ये अच्छा है। मैं दिल्ली सरकार को बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा काम है। हमने भी तेलंगाना राज्य में, जो हमारे तेलुगु भाषा में कहते हैं, अपना गांव अपना पाठशाला, हमने शुरू किया है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ सुधार है। लेकिन जो यहाँ से सीखने को हमको मिल रहा है, ज्ञान कहीं भी किसी के टेके में नहीं होता। जो लोग प्रयास करके उससे प्राप्त करते हैं, दूसरे लोग जहाँ प्राप्ति हो सकती है वहाँ से प्राप्त करना चाहिए।
अब हम ये सोच रहे हैं इसको देखने के बाद में डेफिनेटली हमारे मंत्री जी भी है, प्रशांत रेड्डी जी हमारे साथ हैं, वो PWD के मिनिस्टर है। जिस प्रकार की ये बिल्डिंग सुंदर सी बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ और करिकुलम भी जो कम्प्लीटली चेंज हुआ है, विद्यार्थियों का फ़ायदा हो रहा है, इसलिए हम ज़रूर दिल्ली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे CM साहब से कि हमारे अधिकारियों को यहाँ भेजेंगे, जो भी ओरिएंटेशन यहाँ से प्राप्त हो सकता है हम ले लेंगे आप लोग और के इनको ऑफिसर्स को भी ऑफिसर्स को भी वहाँ ले जाके बताएंगे कि किस प्रकार से अच्छा ये डेवलप किया जा सकता है। जी। अभी सर जिस तरह से पॉलिटिक्स की भी बातें हो रही है, आम आदमी पार्टी और CM अरविंद केजरीवाल लगातार कहते रहे कि हम एजुकेशन को मुद्दा बना रहे हैं पॉलिटिक्स का, आपको लगता है अभी के समय में और जब आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा हो रही है ये मुद्दा ऐसा बना है, पॉलिटिक्स कुछ और चीज़ है, जिस पवित्र जगह में हम लोग खड़े हैं नहीं उसको बाहर ही बात करना ठीक है। एजुकेशन पॉलिटिक्स का मुद्दा बन रहा है? नहीं नहीं,